Hello, it's me. Hey, it's me again, and I welcome you all to this new episode of the Funny Podcast. You must be thinking why exactly this title, because come up with some really bizarre stories, and the title actually hints at something very wrong. So I'll just clear that particular doubt of yours. There's nothing wrong or inappropriate here in that manner. It's just that I'm gonna give you a reference of how India has two notable athletes from Odisha. The first one is a brilliant national record breaker, establishing new records, just too amazing. And the other one, I mean, you must have heard her name, Datti Chand. So yeah, I'll be talking about that. I'll be establishing some really bizarre things today because I am from a field of forensics, and forensics works with law enforcement or judiciary. And one thing that we are hell bent on is evidences. So evidences are very important, and when we talk about evidences, I need to prove it to you also that yes, there are certain things that have to be established before you understand why I keep myself on the lines of the best athletes, best sprinters of the country. So the evidence is here. Now let's just go back a few years. I mean, the year was 2018. I was leaving Delhi for Bhubaneswar. Okay, I'm not Budhya Singh, so I'm not running all the way from Delhi to Bhubaneswar, but yeah. So I had packed up everything, my luggage was ready, everything was ready, and the only thing that was left was I had to meet a friend before I leave. So I planned everything accordingly because I am a very good strategic thinker. I plan everything, I strategize things. And even though I plan all of this, most of the stories that you hear about me, they're just bizarre because I can plan, but I can't execute them. So this time I left my place, looked back one last time, saying bye bye shithole, and I went and boarded my metro. So I was living in Noida. From Noida, I had to go to the airport, which is T3. So T3 airport is a very funny place because I've traveled a lot and I've gone through that airport a lot of times. So it's something that I know what to do at what time, how much time does it take. Everything is very well charted down. So in such cases, I had to meet a friend. So what I did was I went to Connaught Place. From Connaught Place, I went to the New Delhi railway station, the metro station of the New Delhi railway station, and there you get to switch. The switch is to change a train for an express metro line that takes you to Delhi airport in 20 minutes from New Delhi railway station. And in general, it would take you about an hour and more, or even more, if you go by road. Plus, there's traffic, so people prefer that. So I realized one thing, that the reason why I went there before meeting my friend is because I was gonna meet this friend in a place called Nehru Place. I mean, I was thinking how to put it better, but yeah, Nehru Place. Nehru Place has its own metro station, and the metro station has a mall in it. So we were supposed to meet at the Nehru Place Social. So why did I go to the NDLS, the New Delhi Railway Station metro station? Is because there they have the express metro line, and the express metro line has a special privilege for people who travel through Vistara or Air India. So मतलब क्यों नहीं होता है, हर जगह थोड़ा बहुत privilege मिल जाना चाहिए. So I was going through Air India, and the privilege that I'm talking about is called check-in. Yeah, privilege क्या सभी करते हैं नहीं. So this check-in happens at the metro station. They take your bags and it makes sure that it goes on and gets loaded up into the plane. You don't have to travel all the way to the metro station with your bag. Sorry, to the airport with the bag. So you go there, you do a distant check-in. They'll give you a boarding pass also. So it's like properly you've been checked in from the metro station and not the airport. So you skip a few lines there. So I did that. I did my check-in, got my boarding pass. Now I can travel freely because all my bags are on the way to the airport. I could travel all the way into Nehru Place. So I went. Now all of this happened. I did my check-in by 12:31. 12:31. So yeah, by 1:40 something, I was on my way and I reached Nehru Place metro station. Once I reached Nehru Place metro station, I was waiting for my friend. So I waited there for a while, and she came back. She came a little late, like 5-10 minutes or 15 minutes at max. So time is ticking. Just to give you a perspective, my flight was about to take off at 5:50. So I had a lot of time. Plus there's express metro, so it wouldn't take me a lot of time to reach the airport itself. And I met her. We went instead of social. We went to the Irish cafe because back then I was not of legal drinking age, so they were not serving me alcohol. So I was like, fuck it, and we went to the Irish cafe. It's right next to it. We ordered a lot of food, kept eating, kept on talking for quite a while. And during this time, when we asked the waiter to get us the beverage menu, he said that they can't serve me again alcohol. So I was like, Kyun? And they were like, law. And I was waiting for the day. So we were like, okay, खाना तो order कर लिए, खाते हैं. We ate, we spoke, and we ordered a lot of food. So it was quite a lot, and
I figured out that yes, by the time we were done with the Irish cafe, it was already 3. But I wanted to drink, so I knew one more place where I can just skip the line. Now that I say this, I am of legal age, and they've reduced the legal age, so yeah, I won't be in trouble anymore, probably. So we went to this place called the Beer Cafe. Again, as I said, Nehru Place has its metro station, and the metro station has a mall. So inside that, there's everything. We went to Beer Cafe. I had a coupon. So a coupon that had a flat 1,000 rupee off for no minimum order. So if I use that coupon, I can order anything, and they will bill me only after the entire bill goes above 1,000. So since I had this, I was like, let's order some good beer. So good beer basically means something that is not made in India. So we ordered some German beers. We drank it, and it was around 340 or almost 350 that I left. I mean, I said goodbye and I left from the metro station for the Airport Express Metro. So from Nehru Place, I reached at the New Delhi railway station in the next 45 minutes. So it was already 4:15 or 4:20. Sorry, 4:30. Yeah, I should have thought about it. Yeah. So 4:30, I boarded up the express metro. So you change trains, you change the entire line because the fare is also different. So they do the security scan and everything again. The only demerit of express metro is that a normal metro will arrive at the station every 3 minutes, but that is not the case with the express metro. It depends on the time of the day and how many people actually require that much frequency. So I was very stupid there, and it was almost 4:45 because it took 13-14 minutes for the next metro to come up. 4:45, I reached the train. I entered the train, sorry. And when I did, I was very scared now because I did a lot of stupid things. If I would have not stopped for 1 beer or 2 beers, I would have made it on time. So I hopped on. I knew 20 minutes is what it's going to take for the metro to reach the airport. So every single minute I was getting scared, and I was actually dead. I was thinking what exactly is going to happen. It kept on happening for a very long time that I could not think. And in between the New Delhi railway station and the airport, there are only 3 stops. So I have no idea what happened, when did we reach what station, and because I had zoned out completely out of the fear of missing my flight. Now, that's the stupidest thing I've done in an airport probably. And by the time I reached the airport metro station, now again the airport metro station is not exactly going to land inside the airport. It's a separate extension. So it kept on happening. I got down, I wanted to run, but how much will I run? Because I have to tap my metro card. I have to climb up a few stairs. And right now I was in a very hyper mode. I did not think straight. And this always happens because whenever I am late, I hate being late. I don't want to be late at any place. I mean, if I reach the movie theater 5 minutes late, I get so pissed at myself that I just watch the movie, and then the next day I book another show and get another ticket, reach on time and watch the first 5 minutes. And that's how paranoid I get. So this was again happening to me. I was really paranoid. So I started running. There are a lot of escalators because again it's an underground metro, so you need to climb up a lot. There are escalators also, there are stairs also, and the smarter person would obviously take the stairs because the escalator moves like shit. Yes, if you have a lot of time, take the escalator. But if you don't have any time in your hands, you would be very stupid to wait for the escalator to take you up. It might feel good for a couple of seconds, but the moment you reach the top, you feel like, okay, I wasted 5 seconds extra. And those 5 seconds at this point with my life were very, very important. Very crucial for me. So I started running. I tapped my metro card. I exited the metro station, but there's a lot to work on. So I kept on running. I'm running, and I feel like, yes, I am the next Milkha. So there's a bridge that connects the airport building to the metro station building. So I ran through it. People are looking at me. I have one backpack on my shoulders, and with that backpack, I feel like a complete Fauji, and I'm running. I have weight on me, and I'm running. People are also looking at what is happening. There's some DDLJ reboot or something because So I kept on running, and I was trying to figure out some way to reach without any obstacles, which is the stupidest thing I can do. And by this time, it was already 5:15 or 5:20. Now, 5:15 should have been the right time. I reached the departure gate where you show your Aadhaar card and your ticket to the CISF person to allow you to enter. They'll do some little bit of a refresh and then they'll let you go. So this person I had in my mind, because as I said, I'm a very strategic person. I calculate every second and I have to plan something.
So I had this in my mind that yes, I am going to spend at most 8 to 10 seconds. I'll show him the card and I'll keep my phone in my hand, and this is how I'll just get in. But the difference is I had checked in. So instead of the ticket, I had my boarding pass in my hand. Boarding pass has the flight time, it has everything, it has my name. It's a legit boarding pass, it's not a printout. They gave me the literal Air India boarding pass, yellow color, economy class. So I went there, I ran and I reached the person, I showed him, everything was in my hand, and I just waited in the line because there were 5 people ahead of me. And I realized, okay, I did not calculate this. And everyone was entering the departure gate because their flight was 2 hours away. My boarding closes in 10 minutes. So it sucked. It took me 2 more minutes. And I just kept on wondering, how am I going to get through it? And I was already skeptical and I was doubting myself, my own abilities. And all I just wanted was someone to just hop in and just say that, don't worry, it'll be fine. You will get through this. Things are going to get better. Just, give your 100%. Something like that, so that I also feel a little motivated. So I reached the guard and showed him my boarding pass and my Aadhaar card. He saw both. So that is my designated 10 seconds that I had given to him. और उसके बाद the bastard said कि टिकट दिखाओ. मैं बोर्डिंग पास है तो बोलता नहीं टिकट दिखाओ. Now that is the problem because tickets PDF में थोड़ी मैं रखूंगा फोन में. I had to open my email. I had to find that mail in which the ticket is there, and then I had to show him the entire thing again. 10 more seconds. He saw it. He examined my boarding pass. He examined my Aadhaar card. He examined my ticket. And I was like, क्या मैं जा सकता हूँ? The bastard smirked and said, इस हालत में तो अब वापस ही जाना बेटर है क्योंकि हो तो सकता नहीं आपसे. I was like, fucking give me my boarding pass back and let me go. I'll run. He was still smirking when I left, and I actually looked back for that bastard कि हाँ तूने देखा ना, अब मैं देखता हूँ तेरे को. Because I was also now, because I did not get the motivation that I was looking for. If he would have just said कि भागो शायद हो जाए. Instead of that, he said what he said. So I knew कि अगर अब मैं फेल होता हूँ तो मैं इसी को आके गाली दूंगा. So I went ahead. Now I had done my check-in, so वो एक लाइन पे मेरी कट गई कि हाँ नहीं जाना. मैं सीधा भागने लगा. And T3 is a huge airport. It's not like अहमदाबाद और भुवनेश्वर. वहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी बोर्डिंग के बीच में किलोमीटर का फासला होता है. तो मैं भाग रहा हूँ. मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ. मेरे को पता था कि बोर्डिंग से पहले मुझे एक बार सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है. मेरी किस्मत अच्छी थी कि सिक्योरिटी चेक पे भीड़ नहीं थी. नाउ सिक्योरिटी चेक में वो चूतिए होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ ये लो ट्रे और इसमें डालो अपना सामान. तो आई हैड अ बैकपैक behind me. तो मैंने बैकपैक रखा एक बड़े ट्रे में, अपना फ़ोन, वॉलेट, घड़ी सब रख दिया. उसने मेरे जब मैं आगे रख रहा था उसको ट्रे में कन्वेयर बेल्ट पे, उसने बोला बेल्ट भी निकालो. मैंने बेल्ट भी निकाला. सो बेल्ट निकाल दिया, पैंट भी खसा कर दिया, एंड मैं बस धकेल रहा हूँ. तो उसने बोला कि ये बैग में लैपटॉप है. मैंने बोला हाँ. लैपटॉप बाहर निकालो. मतलब लगता है इतना चूता एक्सरे क्या जो बैग में से एक लैपटॉप नहीं देख सकता. बोला नहीं यार निकालो. आई ड्रैग्ड इट बैक. अब मेरे पीछे वाला बोला कि नहीं पीछे जाके आओ. फिर मैं पीछे गया लाइन के, बैग से लैपटॉप निकाला. मेरे को गुस्सा था तो मैंने चार्जर और पावर बैंक भी निकाला, और एक पेन ड्राइव थी जिसका कोई रेलेवेंस भी नहीं था, मैंने वो भी निकाला. मतलब ले पहन, तब तो तू लग नहीं सकता. मैं वापस अंदर डाला. नाउ आई वाज स्टैंडिंग फॉर माय टर्न टू एंटर, गो थ्रू द स्कैनर एंड गेट माय सेल्फ चेक्ड. तो आई वाज इन अ हेस्ट. तो एक येलो पट्टी होती है जिसको हम क्रॉस नहीं करते हैं बिकॉज द डिटेक्टर माइट जस्ट स्टार्ट बीपिंग. तो द पर्सन हु इज चेकिंग थ्रू द मेटल डिटेक्टर वो आपको बोलता है कि कब आगे जाना है. तो मैंने बोला ठीक है भाई वेट कर लेंगे 2 सेकंड और. ही कॉल्ड मी इन. मेरा वो बजा क्योंकि जनरली दे डोंट जस्ट पुल आउट देयर गन्स फॉर दिस पर्पस कि हाँ बच गया तो रोको इसको, बिकॉज दे आल्सो नो कि जीन्स की बटन तो नहीं निकाल सकता तुम, जैकेट की जिपर नहीं निकल सकती, कई सारी चीज़ें होती है जिसमें मेटल होता है और निकाल भी नहीं जा सकती. निपर पियर्सिंग्स इंक्लूडेड. मेरी नहीं है बट हाँ इंक्लूडेड. सो दैट इज वाई दे डू अनदर मैनुअल जिसमें वो हाथ से मेटल डिटेक्ट यूज करते हैं. तो आई वेंट अहेड वेरी कॉन्फिडेंटली. आई जस्ट केप्ट माय बोर्डिंग पास इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई जस्ट स्प्रेड माय आर्म्स लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टाइल. तो उसने शुरू किया. सर पे कुछ नहीं था, गर्दन के नीचे गया, छाती में पट हुआ. अगेन आई एम सेइंग यू ट्रिपल पियर्सिंग नहीं है मेरी, बट उसने बोला क्या है ये. देन आई रियलाइज कि मेरी मम्मी ने मेरे को हाथ में एक अंगूठी और गले में एक पेंडेंट टाइप का पहना दिया था. वो फड़फड़ाने लगा. तो मैंने उसको बोला ये है. तो वो तती निकालना नहीं होता क्या. बोला कि भूल गया. तो वो भूल कैसे जाते हो. मतलब बात मत करो यार, उतार देता हूँ फिर से स्कैन कर लो. हाथ से अंगूठी निकाल ली जिसको टाइम लग गया क्योंकि अंगूठी टाइट थी. गले से वो पेंडेंट निकाला एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम टू स्कैन मी रियली क्विक. वो नीचे गया, उसने जीन्स की बटन पर क्लिक किया. उसके बाद आगे लेफ्ट राइट कर रहा था तो फिर से फटका. तो मैंने बोला ये एक बटन टाइप का होता है. नहीं कुछ जेब में. नहीं मतलब कुछ नहीं है. मैंने हाथ डाला उसको प्रूव करने के लिए. जेब में से एक पेपर क्लिप निकली. माता चौथ. एंड वाई आई मीन आज ही के दिन क्यों और पेपर क्लिप मैं यूज़ भी नहीं करता. मेरे जेब में पेपर क्लिप करता क्या है. मुझे भागना है. आई नो दैट द बोर्डिंग गोइंग टू एंड इन लाइक 3-4 मिनट्स.
इतने ड्रामे में वो मेरे को बोल रहे हैं कि और भी कुछ छुपा के रखे के बताओ, जो तो रहा हूँ। मैं भाई देखो मेरी फ्लाइट की टाइम देखो प्लीज़, मेरे को जाने दो, मैं लेट हो गया हूँ। एंड ऑफ कोर्स देश सेवा उनकी ड्यूटी है, तो उसको बोला जूता उतारो। बोला प्लीज़ नहीं, आप जूतों पे स्कैन कर लो, अगर बीपी हुआ तो उतार देंगे, लेकिन नहीं। तो अब इस टाइम पे मेरे अंदर सेल्फ डाउट भी आ गया था कि गलती से बीप ना कर जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पेपर क्लिप है, वो कहाँ से आ गया। तो जगह टोइंग पहन के घूम रहा हूँ मैं, मेरे को पता ही नहीं था। सो उसने मेरे को जाने दिया। एंड जाने के बाद ऐसा नहीं कि मैं फिर से भागने लग गया, क्योंकि जो चुतियापे में मैंने सारा सामान निकाला था अपने बैग में से, मुझे वो वापस अंदर भी तो डालना था। मैंने ट्रे उठाई, चीज़ें भर 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 अंदर डाली, बुलेट उठाया, घड़ी उठाई, फ़ोन लिया, फिर मैं भागने लगा। ना P3 इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो मैं भागे जा रहा हूँ एंड देयर आर सो मेनी शॉप्स देयर। इतने सारे शॉप है कि आप सोचते रह जाओगे। तो भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, एंड आई कंप्लीटली फॉरगॉट, बिकॉज मेरे अंदर मैं कंडीशन ऐसा हूँ कि मैं T3 जाता हूँ, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले या तो मुझे कॉफ़ी चाहिए या तो मुझे एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर। बट अभी मेरे पास वो चीज़, वो प्रिविलेज भी नहीं था, बट मैं जानता कि एयर इंडिया में गंदा सा खाना मिल जाएगा। सो आई वाज रनिंग। बट मेरी कंडीशनिंग ऐसी है कि एक पॉइंट पे एक एस्केलेटर आता है जिसके ऊपर फूड कोर्ट है। तो मैं एस्केलेटर पे दौड़ने लगा और मैं ऊपर पहुंचा, मैं बोला फक, क्योंकि मैंने काफ़ी सेकंड्स वहाँ पे वेस्ट कर दिए। नाउ द सैड पार्ट इज कि मुझे वापस उतरना था, तो मैं एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ना दौड़ते दौड़ते इज ईजियर देन नीचे उतरना दौड़ते दौड़ते, बिकॉज वो सीढ़ी भी नीचे जा रही है और आप भी नीचे जा रहे हो, और जब नीचे जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम कम एफर्ट लगाते हैं ऊपर चढ़ने से। तो यू हैव नो कंट्रोल कि तुम्हारे पैर कितने तेज जाएंगे और तुम कहाँ लड़ खड़ा हो। तो मैं इतना भी तेज जा नहीं सकता था, बट मुझे जाना था, तो जा रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, वापस एस्केलेटर नीचे आया, दूसरे रास्ते से घुसा, मैं पहुँच गया। नाउ फनी इनफ मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना कलेश था कि आई वाज थिंकिंग कि इससे बुरा क्या होगा। सो देयर इज दिस एंटायर पाथवे वेयर एयरपोर्ट में वो लोग आपको बताते हैं ना कि आपका फ्लाइट इस गेट से बोर्ड करेगा, उस गेट से बोर्ड करेगा। सो ऐसे 60-70 गेट है कुछ दिल्ली एयरपोर्ट में, और जिस रोड से मैं जा रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड पे कुछ 10 से 27 तक था, 27 से बाकी 60 राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे वो था, और 1 से 10 शायद दूसरे टर्मिनल पे होता है। सो मैं पहुंचा उस सेंटर पे, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अब तक अपना गेट नंबर नहीं देखा था। गेट नंबर था 59। एंड मेरे पास, मैं इतना एग्जॉस्टेड था बाय दिस पॉइंट, बिकॉज आई बीन कॉन्स्टेंटली रनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड नाउ आई हैव अ वेरी ह्यूज स्ट्रेच टू रन 27 से 59 तक। सो आई केप्ट ऑन रनिंग, मैं रुका ही नहीं। एंड दिल्ली एयरपोर्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे सीढ़ियों पे एस्केलेटर होता है आलस के लिए, एयरपोर्ट्स में एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए कन्वेयर बेल्ट्स हैं, जिसके ऊपर आप खड़े हो जाओ वो अपने आप आपको ले जाएगा। सो वेरी नोटी थिंग, बट अगेन वेरी स्लो। सो पूरी दुनिया लाइन में लग के कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ रही है क्योंकि उनको तालस है, और मैं उनके साइड से भाग रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ। एंड आई हैड जस्ट 1 सेकंड टू लुक इनटू माय फोन कि टाइम क्या हुआ है। टाइम वाज 5:24 एंड इट मस्ट बीन 30-40 सेकंड अहेड। तो मैं दौड़ रहा हूँ और मेरी सांस फूल रही है, बट मैं रुक नहीं सकता क्योंकि फ्लाइट मिस हो जाएगी और मैंने बहुत पैसे खर्चे हैं, क्योंकि एयर इंडिया इंडियो नहीं। तो भगते गया, भगते गया, भगते गया, भगते गया, समहाउ आई रीच्ड अराउंड 48-49। तब मेरी सांस फूल गई, प्लस मैंने एक और गलती कर दी, मैंने वापस फ़ोन देख लिया टाइम चेक करने के लिए। अब इस चक्कर में, ये टाइम चेक करने के चक्कर में, मैंने रियलाइज़ कर लिया कि अब 5:25 तो हो गए, रेगुलेशंस के हिसाब से बोर्डिंग टाइम इज़ ओवर, गेट बंद हो जाएगा, तो मार्च हो जाएगी। तो स्टिल आई हैड टू मेक दैट कॉल कि हाँ जाना है आगे, नहीं जाना है। मैं चुतिया होता अगर मैं नहीं जाता। तो आई केप्ट ऑन रनिंग, आई केप्ट ऑन रनिंग, एंड एज आई केप्ट ऑन रनिंग समहाउ आई मैनेज टू रीच गेट नंबर 59, जहाँ पे एक आदमी खड़ा था जो एयरलाइंस के लिए काम करता है। एंड बिकॉज ऑफ हिम आई हैड दिस होप कि हाँ उसको अगर मैं भीख मांगूंगा तो मेरे को मिल जाएगा अंदर जाने। ऑब्वियसली देयर वाज नो वन एल्स बोर्डिंग, आई वाज द लास्ट पर्सन। आई रीच द काउंटर, शोड हिम माय बोर्डिंग पास, ही इज लाइक अब तो टाइम हो गया। मैंने उसको बोर्डिंग पास दिखा दिया एंड मैंने उसको बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, आई बीन रनिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं हाफ रहा था। सो ही सॉ मी एंड ही सेड ओके गो, ये उसने बोला। बट उसके दिमाग में ये चल रहा था कि इसने बोर्डिंग पास निकाल लिया, इसने चेक इन कर लिया, इसका चेक इन बैगेज है। और मैन वुड अंडरस्टैंड दिस दैट जितनी एक्साइटमेंट और जल्दी हमें डालने में होती है उतनी एक्साइटमेंट हमें निकालने में नहीं होती। सो ही वाज लाइक कि इसको अंदर डाल देते हैं, बैग को निकालेगा, और पता नहीं बैग मिलेगा भी नहीं, फ्लाइट लेट होगी, टंटे करेगा, प्लस मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा था। सो इस चक्कर में मैंने, उसने मुझे जान दिया। एंड अभी भी मेरा दौड़ना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो काउंटर से फ्लाइट तक जाने के लिए, वो सेगवे में भी घुसने के लिए काफ़ी डिस्टेंस है, ऊपर नीचे बहुत दौड़ना पड़ता है। मैं दौड़ जा रहा हूँ, दौड़ जा रहा हूँ, और मैं हाफ रहा हूँ, मेरा गला सूख चुका है, आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, और सम हाउ सेगवे क्रॉस करके मैं पहुँच गया। और अंदर जैसी, और आखिरी जो स्टेप होता है ना जिस पे आप अंदर, आपको पता चलता है कि हाँ नाउ आई एम इनसाइड द एयरक्राफ्ट, वो मैंने स्किप किया। मतलब वो मैं जंप करके अंदर पैर रखा, जैसे मैं रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहा हूँ। और जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक एयर हॉस्टेस पलटी, उसने मुझे देखा, मेरी टी शर्ट गीली, मेरा चेहरा गीला, सांस मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो एयर इंडिया या फिर किसी भी एयरलाइन का एक होता है कि दे स्टार्ट ऑफ बाय विशिंग यू, लाइक हेलो, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग,
This person looked at me to say that, but then she turned away and I was like, fuck, मैं इतना दौड़ के मेरे को उसको welcome तो कर. Because she turned back to get me a bottle of water. I was happy. And she was nervous कि भैंसो इससे इतना पसीना निकल रहा है, पेट में बात फट जाएगी. तो उसने मुझे ये दे दिया, उसने बोल दिया कि हाँ वेलकम. मैं पानी हाथ में लिया, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. उसने बोला कि आपके इतने हो जाएगा कि मैं आपके लिए डिफिब्रिलेटर भी लाऊं, क्योंकि हालत तो मेरी वैसी ही थी. नाउ मैं गया, बैठा, मैंने सीट बेल्ट पहनी और सांस में भी ले नहीं पा रहा हूँ. मैंने पूरी पानी की बोतल पी ली. वो एयर होस्टेस वापस मेरे पास आई कि डू यू नीड मोर वाटर. मैंने बोला आई वुड अप्रिशिएट इट. और ये बोल के मेरी जान तो है नहीं, अब बची नहीं. आई वाज लाइक अब तो मैं शायद सो जाऊंगा या तो बेहोश हो जाऊंगा. बट समहाउ डीप डाउन एक है कि हाँ हमारी जनरेशन में ये चीज़ है कि कंपल्शन है कि जब भी तुम फ्लाइट बोर्ड करते हो तो इंस्टाग्राम पे बोर्डिंग पास की स्टोरी तो डालनी जरूरी है. तो मैंने भी वही किया. वो पानी लेके आई, उसने देखा मैं अपने फ़ोन में स्टोरी का कैप्शन लिख रहा हूँ और वो पानी लेके वापस चली गई. आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी. उसने मुड़ के बोला कि नहीं, यू डोंट डिजर्व दिस. आई थिंक उसने फ्लाइट में बाद में तो मैंने बोला कि मैंने नॉनवेज के लिए ऑप्ट किया. उसने बोला नॉनवेज तो खत्म हो गया सर. वो भी उसने जानबूझ के किया होगा. और अगर उसके पास में चलता तो वो एयर इंडिया में मुझे इंडिगो के काजू और वो मूंगफली भी दे देती है, तो पोहा पकड़ा देती. So this is why I think I'm a really good sprinter and I should be on the lines of Dati Chan and Bilka Singh. So I hope that this was bizarre. I mean, I feel that it is. I hope you feel like yes, this is real, because I know it is. And I'll be back soon. I mean, thank you so much for listening to this. This podcast, this season of the podcast is being supported by the India Film Project Podcast Lab and anchored by Spotify. So huge shout out to them. Although ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे shout outs हैं तो मल्टी बिलियन कंपनी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है. तो this will be all. I'll be back soon. Thank you so much. If you liked it, please let me know through my Instagram handle or subscribe to my podcast. I'm planning on keeping this on for a very long time. So yeah, if you subscribe, you get notifications whenever I drop in a new thing. That will be all from my side. Bye bye. Take care. Stay safe.